चलो, I'll go for a new topic. Force on a, this one also already we studied also. Based on this, we are doing formulas. That's why I told. Force on a charge particle plays in electric field. Tell me, whenever electric field में, if I put a charge plus Q charge, what is the force acting on this charge? Tell me, कितना force act होगा? बोलो. QE. हाँ, QE, QE या Q नॉट इंटू की कुछ फिर. अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट होगा QE ओनली, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. लाइक इफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में द फोर्स विल बी एक्टिंग. दैट इज द वन वी हैव टू अंडरस्टैंड. Force on a charge particle placed in electric field. Now, we will do the numericals based on this. Where we got by QE formula किधर से आया? Electric field is equal to force per charge, unit charge, right? Test charge, right? We done magnitude. And direction also is in the direction of force. F equal to QE. Okay, now questions करेंगे based on this all values का सबसे. चलो ना करो. If the mass of the electron given, charge of the electron is given, G value is given, then the intensity of electric field required to balance the weight of the electron is. So what is saying, suppose मान लो electric field is like this in this direction. Electron है, उसका mass है m. Okay. Now इसको balance करने के लिए he is asking the कितना electric field लगाने का, so that see if there is no electric field, what will happen if I leave electron? It will fall down, right? Because of which force it is falling down? mg force, right? उसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन रहने का और अप रहने का. चलो अप रहेगा ना. अप रहे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज अप, फोर्स किस तरफ एक्ट होगा? टेल में. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, फोर्स किस तरफ एक्ट होगा? डाउनवर्ड्स एक्ट होगा. ओके, सो बोथ विल बी फॉलिंग डाउन. वो बैलेंस नहीं होगा और नहीं गिरने का. इधर नहीं है इलेक्ट्रॉन. व्हेन आई लीव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट शुड नॉट फॉल. दैट मींस weight and force should be in the opposite direction. So that's why electric field is downward direction. Why? I told you negative charge का exactly opposite direction में the force will be acting. Okay, so that's why आपको diagram draw करना पड़ेगा electric field is downwards बोल के. Okay, so upwards नहीं है, downwards. Okay, now which force is acting upwards? Electrostatic force is acting. कौन सा? QE force is acting. Q is nothing but charge of the electron, right? I can write EE force acting. Now at equilibrium condition में both equate करो and try to find the E value, electric field intensity. I'll give you options.
Sir, option 2. Yes. 5.6 in 10 power minus 10 आया. So simply equate करने का E is equal to mg. Therefore E is equal to mg by E. M value electron, G value substitute किया तो 5.6 10 power minus 11. Okay. Next one. Calculate the electric field strength. E value is telling to find. Required to just support a water drop of mass this much having a charge this much. Okay, मतलब positive charge only, right? He not talked about negative charge, positive charge. Now electric field किस तरफ रहने का? Water drop को, the water drop should not fall down. Required to support the water drop of mass. Upwards. Electric field is upwards. Electric field upwards आएगा. And ये वाला water drop है of mass this much because mg is acting downwards, right? And is a positive charge है ना? Since electric field is upwards, the force is acting also upwards. Then only it will balance electrostatic force. So you can is nothing but QE, right? QE. Now equate this two and try to find the value of E. Equilibrium condition, right? It's supporting. Approximate value you can tell. (6.25 × 10 power 17). 10 power 17. No. So 16. 16. Minus 16 plus 16. Plus 16. So 6.25 to 10 power 60. Yes. आया? श्रिया मारा है? Just equate करना का these two. कौन सा? QE is equal to mg. Same thing. E is equal to mg by q. चलो. A charge q is distributed over the length L uniformly. I said last time we done, right? Uniformly distributed. Find the force on the charge q due to small q. So here is the total charge is q बोल के बोला. I force on the charge capital Q plus Q है. मान लो इधर से a distance दूर में है. I want to find the force on charge plus Q. Force. KQQ divided by A into A plus L. Yes, good. देखो इसमें electric field we found, right? What is the formula for electric field? KQ by छोटा distance into बड़ा distance, right? A plus L. For electric field का force का formula क्या है? QE, right? खत्म. Q मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ. समझ में आ रहा है? सो कितना आएगा? QE से ये कितना QE बोलते हैं इसके ऊपर Q कैपिटल, राइट? हाँ. सो व्हाट विल बी द आंसर? KQ by A into A plus L. बिकॉज इसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर QE कैपिटल QE उसके ऊपर. सो E के जगह में KQ by A into A plus L. सो ऑलवेज मतलब अगेन अगर ये एक्सप्रेशन भूल गया तो आपको डिराइव करना पड़ेगा अगेन, छोटा सा एलिमेंट लेके करना सॉल्व करने का. सो दैट्स व्हाई फॉर्मुलास आर इंपॉर्टेंट. डेरिवेशन भी लर्न करने का. सपोज ट्विस्टेड दिया तो भी यू कैन डिराइव. Understood, Sriram? QE formula. So that always, whenever they say exam में force बोलते तो you will always see the coulombs law. K Q1 Q2 by R square. इधर इसका नहीं, ये कैसे करेंगे, फिर से प्रॉब्लम इंटीग्रेशन कर रहा है, ऐसा नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू नो आल्सो विल गेट ए फोर्स. ओके चलो ये करो. The given electric field is mg by q. E value, electric field is downwards. There is a pendulum, मतलब एक रोप है, and there is a bob. उसका चार्ज है q and m. Electric field is downwards, and that is how much they given? Mg by q. Okay.
Find the time period of oscillation for the pendulum. Time period चाहिए. Bob का pendulum time period मालूम है ना? What is the formula? Oscillation we studied, right? T is equal to 2 pi Under root L by G. under root L by G. But you know, whenever there is some other forces or something, we should write G effective. ये कौन सा फोर्स फैक्टर है इधर? वन इज तो mg है बाप के ऊपर, एंड दूसरा फोर्स चार्ज क्यों है, प्लस क्यों है ना, इन द सेम डायरेक्शन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE. नो एक्सेलरेशन कितना होगा? G effective is, फॉर्मूला क्या है? नेट फोर्स बाय नेट मास. So net force is how much? mg plus QE by net mass is m. Okay. E के जगह में substitute mg by q. mg plus q times of mg by q. So q cancel by m. So mg plus mg 2mg by m. mm cancel 2g. So if I substitute now here in this, so time period कितना होगा? 2 pi under root L by 2g. The time period. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्लोली इज कंबाइनिंग विथ ऑसिलेशंस. टाइम पे ऐसा धीरे धीरे कंबाइन करेगा, इवन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन ऐसा कंबाइन करेगा, सो दैट यू नो वो लोग ऑल चैप्टर्स दे विल गेट सेटिस्फाइड दैट ओके वी कवर्ड ऑल चैप्टर्स बोल के उनको. ओके, कॉपीड. यस, ना करो. नो वी विल डू until the given E value that much. Find the time period of oscillation of the pendulum. बोलो. 2 pi root L by G root 2. यस, करेक्ट. आया सब लोग को? Yes, sir. Yes. ओके, सो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसा इसी डायरेक्शन में, राइट? QE एंड ऑनवर्ड्स इज mg एंड E के जगह में mg by q, राइट? तो Q कैंसिल, mg दोनों फोर्स है ना, नेट फोर्स कौन सा है? mg रूट 2. एंड वी नो दैट G इफेक्टिव क्या है? नेट फोर्स में नेट मास, सो mg रूट 2 by m कैंसिल g रूट 2 आएगा. सो 2 pi अंडर रूट L by G इफेक्टिव. श्याम आया? यस. ओके. Now motion of a charged particle in uniform field, very important, critical path है ये वाला, ये एडवांस में भी आएगा क्वेश्चंस. हियर क्या है? we will combine with the take the help of kinematics also. kinematics का हेल्प लेंगे. मतलब अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मूव किया, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, whenever there is a force there is a acceleration also. Okay, so again we can use V equal U plus AT. Equations of motion याद है? 3 equations बोलो. V equal to U plus AT E square minus U square is equal to 2S. हाँ. S is equal to UT plus half AT square. Yes, now try करो, देखते हैं. You will do.
Question understood? A charged particle of charge q and mass m is released from rest with a uniform electric field, neglecting gravity. Gravity neglect कर लो. M is not there. The charge q है and mass m है. Initially released from rest मैं छोड़ दिया ऐसा u equal 0. अगर gravity होता तो it will be falling down also, but there is no gravity. So इसके ऊपर force लगेगा, QE force लगेगा. Okay, and start moving. Zoom बोल के जा रहा है. Then he's telling the kinetic energy of the charged particle after t seconds. I want kinetic energy is how much? After certain time के बाद. मतलब after time t में first try to find velocity, then only can use kinetic energy. So half q square e square t square by m. So half Second. t square. Second one ना Yeah. देखेंगे. The second one. Yes, इतना जन बोल रहा है. Second one is right. देखो इनिशियली एट रेस्ट में छोड़ा ना, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0. फर्स्ट यू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन का, देन ओनली कैन सॉल्व. फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर? QE. देन एक्सेलरेशन आल्सो वी कैन फाइंड, राइट? QE नेट फोर्स बाय मास, राइट? So QE by m is the acceleration you got. Velocity we want. So what is the equation of motion we can use? And time t, you know already. So which equation of motion will use? V equal to V is there, U is there, A is there, T is there. V equal to U plus AT. So initial velocity is 0. So velocity is equal to QE by m into T. This is the velocity you got. Okay. Now kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? Is famous formula from 7th class you are studying, right? Half mv square. V के जगह में substitute करो. So half m into QE by m into T. So the whole square. So इसको solve किया तो क्या आएगा? Q square E square T square by 2m. This is the velocity. They can give in terms of numbers में, variables में, they can give anything. They can ask. Next. नौ करो, देखते हैं, मजा आएगा. फर्स्ट आंसर बोल दिया ना, सेकंड आंसर बोलो, देखते हैं. ए इलेक्ट्रॉन enters perpendicular to electric field with a speed v0. एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, राइट? सो इट इज एंटरिंग परपेंडिकुलर, ऐसे एंटर हो रहा है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नीचे, डाउनवर्ड्स. ओके, v0. Find the vertical deflection of the electron and angle at which emerges out theta. Assume the space is gravity free. There is no gravity, but assume. Okay. Now tell me, normal electric field is downwards. If I throw electron नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? If I throw exactly electron like this, zoom बोल के, in a uniform field is downwards, upwards जाएगा ना, because force is acting upwards. So इसको ऊपर force लगेगा exactly in the upward direction. F force लगेगा, right? Now because of that only the electron path will change, and it will move like this. It is a 2-dimensional motion, one-dimensional motion. Like particle is going like this. मतलब if you see x में भी जा रहे हैं, y also going, right? So 2-dimensional motion. He is asking what is the deflection? मतलब horizontal से कितना ऊपर गया? So that means sy we have to find. Displacement in y direction. I'll give clue. Take x direction separately, y direction separately, and try to find sy, displacement in y direction. Initial velocity in x direction is how much? V naught. V naught. Okay.
And acceleration x direction is acceleration x direction 0. Very good. Oh, same. Because x direction there is no force only, there is no acceleration. Gravity नहीं है कुछ नहीं है. X direction always 0. No करो. Sx displacement in x direction is x. Total x, right? इतना displacement हुआ. And time t is t. Similarly, uy, ay, sy. Sy is y, right? Initial velocity in y direction कितना? You're throwing horizontal on initial velocity, so there is no y direction. 0. And acceleration in y direction is how much? QE by M. Because ऊपर जा रहा है ना, so force is QE, and so nothing but EE by M, right? EE by M. Now find, our intention is to find SY. So how do we find angle? First y आ गया, I have to substitute values. सबसे करो. In projectile motion also we done like this type of problem. X direction, y direction separation करके then combine करने का in projectile motion. Time expression should not be there in the final expression में. So if you apply here, s equal to ut plus half d square, x direction, x direction, x direction. So ax is 0, x is equal to v naught into t. So therefore t is equal to x by v naught. From this we got time. Okay. Now इसमें भी apply करो. S equal to ut plus half at square. So sy, uy, ay. Uy तो 0 हो गया. Sy is y is equal to half ay is ee by m. T के जगह में substitute x by v naught whole square is x square by v naught square. This is the expression for y. This is the displacement. Okay. Now angle कैसे find करेगा? मतलब finally when it's coming, this angle I want. When it's coming like this, theta angle I want. The angle at which it emerges. Apply trigonometry there. In here देखो, here velocity y direction में ऐसा रहेगा, velocity in x direction में ऐसा रहेगा ना. If I draw, velocity in y direction will be there, velocity in x direction. Because velocity will change, right? Every point of time velocity will change. At that point में दो velocities होगा. And the angle is theta. So what is tan theta? Is equal to opposite by adjacent. Okay. Now मतलब initial again x direction y direction लेके final velocity find करो. Then substitute here, you will get the answer theta. ये तक understood समझ? Now velocity is find करो. X direction तो velocity तो fixed है, v naught. Now y direction find करो. EE by M x by v naught. Answer again. Tell me. E X by M v naught. The velocity in x. square. V naught square. V naught. Only v naught, right? Uh-huh. So for velocity, it's only v naught. For tan theta, it's Tan it only. Theta is how much? Tan theta is EEX by M V naught square आएगा. yeah. V by this one you know, acceleration you know, time also you know, time is x by v naught. Substitute. You can apply v equal to u plus at also you can take. T is equal to x by v naught and v equal to u plus at you can take. Because vy, uy, ay. So uy is 0. So vy we want to find, right?
So AY is E by M into X by V naught. खत्म. VX you know V naught. सब करो. By V naught square आएगा ना? हाँ. P naught square. V naught square. So हम तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये बिकॉज थोड़ा एडवांस का है. E by M into X by V naught by VX के जगह में again V naught. So that's why V naught square आएगा. So therefore theta equal tan inverse of this one. Tan inverse of this. Karthik, understanding का? तो मोशन में चैप्टर नेम है मोशन काइनेमेटिक्स यूजफुल होने वाला कंपलसरी. You have to split into x direction y direction properly and you have to use equation of motion solve. Okay, next problem जाएंगे. Finish huh? Find the minimum value of V naught such that Q here plus Q is there just crosses the lower plate in gravity free space. There is no gravity, just crosses the lower fixed plate. See, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया है, ये पॉजिटिव ले लो ये नेगेटिव ले लो. दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है मान लो. ओके, नाउ टेल मी इफ आई थ्रो लिटिल वेलोसिटी से क्या हो जाएगा? इसका फोर्स नीचे लगेगा एंड इट विल फेल्ट हियर ओनली. इफ आई थ्रो लिटिल फोर्स इट विल गो अप टू हियर. व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी आई शुड थ्रो सो दैट इट जस्ट crosses the lower plate? मतलब एग्जैक्ट उधर तक कॉर्नर में गिरने का. That is the concept. V naught we have to find such a way that here also because of electric field मतलब it just crosses means इधर तक आएगा, just crosses. मतलब ये भी 2 dimension में, ये भी 2 dimension है. Try to split into x direction y direction separately. X direction y direction. And displacement in x direction how much? Sx is how much they given, L is given, Sy is how much? Sy is how much? Sy D by 2. minus d by 2, right? Downwards. This is minus d by 2. Use करो. Apply equation of motion s equal to plus half a square and solve and find velocity v. ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम लोग डरने की नहीं है. फर्स्ट ओके, x डायरेक्शन में ux is equal to v naught and ax is 0, sx is equal to L. These are things you know. And time t. Apply s equal to plus half square. आपको v naught चाहिए, v naught के लिए 12 रहेंगे ut plus since s is given to you that's why s में जा रहा है. That's half at square sx ux ax. So L is equal to v naught into t. ये तो 0 है पूरा. So therefore time is equal to L by v naught. Okay. Now y direction में what are the things you know? Uy is 0. Ay इसके ऊपर फोर्स लगेगा downwards direction. QE and QE by m, since it is downward direction I am putting minus QE by m and Sy is minus d by 2. Then again apply s equal to ut plus half at square. I want v, right? So ut plus half at square sy uy ay. Sy is minus d by 2. Uy is 0. Half into minus qe by m into t square means L square by v naught square. From this v naught we can find it directly. Minus minus cancel. 2 cancel. From this just v naught square find karo. V naught is equal to how much? Good. Q E L square by MD.
आई नो इधर से वी नॉट आ जाएगा. They can give the numbers, values, and you can solve. थोड़ा लिटिल इसके बाद अगेन इजी रहेगा, रिमेनिंग पूरा इजी है. चलो, हो गया. गुड. या I करो. What is the maximum value of u? What is the maximum value of u such that the particle of mass m and charge q just misses the upper plate? एक ग्रेविटी फ्री स्पेस है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, मतलब 37 डिग्रीज में थ्रो किया तो जाएगा जाएगा जाएगा, जस्ट मिसेस द अपर प्लेट, मतलब थोड़ा सर्टेन एंगल में थ्रो किया तो जस्ट मिसेस द अपर प्लेट एंड फॉल डाउन, मतलब इनडायरेक्टली इट रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट तक रीच होगा. ही सेलिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू अगर मैं थ्रो करूंगा, देन ओनली इट रीचेस जस्ट मिसेस द अपर प्लेट. ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी आल्सो द गिवन, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, राइट. हाँ, बाई डायरेक्शन का ले लो, सिंपल हो जाएगा. Tell me what are the things we know. We want to find u, right? Initial velocity we have to find. Okay, uy is how much? U cos theta, u sin theta, right? Uy is how much? U sin 37, right? So कितना होगा? ठीक है, लास्ट में करेंगे. U sin theta and ay is how much? Because ये मास m है, चार्ज q है, एंटरिंग फोर्स नीचे लगेगा, so कितना होगा? Acceleration will be how much? QE by M. So downward है ना force, so minus QE by M. QE by m. And Vy is how much? Final velocity, because it reaches to the maximum height, just misses the upper plate, right? Maximum height reach हो रहा है, so what will be the velocity is 0. Vy is 0, right? X में रहेगा. Now apply equation of motion to find u. Which equation of motion? Without time वाला, which equation of motion? V square is equal to u square plus 2as y direction, y direction, y direction, y direction. And sy is how much? Here sy also we missed. Sy is d, right? Minus d. That's all. Positive s is highest height, right? Y plus d ले लो. Now substitute करो. Is it 10 QED by 3M? Okay, देखेंगे. Root of that. रूट में आएगा, ये कर दो. Root of 10 QED by 2. हाँ, यस. आया साथ ही गाने Yes. वीडियो. चलो, this is a topic. Now we'll go for the new topic, electric field lines. A pure theoretical topic. Electric field lines, इसका properties वगैरह देखने वाला है. Electric field lines के बारे में already we know, right, that pictorial representation क्या कैसा रहेगा. पर पॉजिटिव चार्ज के लिए the electric field is away, radially outwards बोल के दिया ना. एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड्स. दिस वन यू नो. इस फील्ड के बारे में ओनली वी आर लर्निंग. इस फील्ड्स के बारे में ओनली वी आर लर्निंग. फील्ड लाइंस के बारे में वी आर लर्निंग. ओके, नाउ विल सी द डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. डेफिनेशन देखो. इट इज एन इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन द रीजन ऑफ स्पेस टाइम along which a free positive charge would move if allowed to do so. So लिखो. So what is saying? Electric field lines are imaginary lines. आपको नहीं दिखेगा,
चार्ज इधर चार्ज है तो इसके ऊपर इमेजिनरी लाइंस आर देयर. सपोज इफ आई पुट ए चार्ज q प्लस q नॉट टेस्ट चार्ज आई विल पुट द टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आल्सो सेम डायरेक्शन रहेगा. इफ आई पुट ए टेस्ट चार्ज q नॉट इफ द इसके ऊपर फोर्स ऐसा ऐसे जा रहा है बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो उसी डायरेक्शन में बोल के वी विल ड्रॉ द इमेजिनरी लाइंस बेस्ड ऑन द टेस्ट चार्ज लगा के. ओके, so these are electric field lines. इधर कंपास नहीं रहेगा ना, ओनली व्हेन वी पुट ए टेस्ट चार्ज ओनली वी कैन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी डायरेक्शन में जा रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है. नाउ विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसका प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह. सो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल एनी प्रॉपर्टीज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज एनी प्रॉपर्टी वी स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 10th क्लास में. ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज. Positive charge, negative charge is there. Where it will originate from positive charge and terminate at negative charge, right? Because they originate from positive charge and terminate at negative charge. And I told difference between the magnetic field lines and electric field lines. Magnetic field lines forms a closed loop. Electric field lines never forms a closed loops. So they do not forms a closed loops. Next one. They do not terminate in free space. मतलब suppose प्लस क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो बोले तो यू विल ड्रॉ लाइक दिस. सपोज यू ड्रू लाइक दिस. नाउ टेल मी व्हाट इज वेदर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर हियर or not. You drew this here only. Whether electric field will be there here? Yes, electric field will be there because they do not terminate in free space. You drew like this only, but actually it will terminate at infinity. We assume always it is infinity tak. So they do not terminate in free space. Next one. Okay. The number of field lines drawn from a charge is subjective. That is our personal matter. It is a relative number of lines that matter. Okay. So what is saying? Number of field lines drawn from a positive charge are subjective. From a charge is subjective. Matlab, suppose if I tell to draw the plus q charge ka electric field lines. Okay. Some people will draw like this, like this, like this, like this. Some people will draw two or more. Some people more time, both time है इसलिए ज़्यादा draw करेगा. So it is personal matter. Number of field lines drawn from a charge is subjective. It is personal matter. We can draw any number of field lines. That is not a matter. But relative number of lines that matter. Suppose if I tell to draw plus q and plus 2q, that ऐसा ड्रॉ प्लस क्यू को ड्रॉ करके प्लस 2q को दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. when I tell to draw beside draw करो बोले तो relative number of lines that matter. So इधर 4 है तो इसका डबल है ना, कितना रहने का 8 रहने का. So this is right one. 4 है तो 8 रहने का. So number of field lines are matter. Another property. ये theoretical है. ये सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल के द 23 इयर्स क्वेश्चंस में आई पुट राइट. वो सेकंड टॉपिक यू हैव टू सॉल्व. टाइम स्पेयर करो, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा. दिस इज द राइट टाइम. नीटली थोड़ा 5 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम्स करके आंसर्स भी देयर, डिटेल एक्सप्लेनेशन आल्सो इज देयर. सो करके चेक करो, देन यू विल गेट. व्हेन दे कम टू योर स्कूल टाइम में दैट टाइम यू विल फील इजी हो जाएगा. ओके.
Next, relative number of matlab relative number of lines is proportional to magnitude of charge. More the magnitude, more the lines should be there. Relative number of lines is proportional to magnitude of charge. Next, electric field lines are symmetric about line joining two charges. So symmetric rahega. Suppose plus q1 minus q2 is there. Suppose you drew like this, see, originate from positive and enter it and terminate at negative charge. Suppose you drew two above, you should draw two below. It should be symmetric about the line joining the two charges. Okay, suppose it is coming like this, means you have to draw bottom at two. Symmetry should be there always. मैक्सिमम 4 to 5 classes में चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट चैप्टर डन. स्टार्टिंग चैप्टर्स बड़ा है थोड़ा. Second part of the modern physics, that's why nearly 6 to 7 months they will take to complete that electromagnetism पूरा. बाद में modern physics, semiconductors all will be completing within 1 month में. Very small chapters. that हो जाएगा. Like modern physics 3 chapters, semiconductors 1 chapter, electromagnetic. So 5-6 chapters are easy in second year. Okay. Next, the relative closeness of the density field lines is greater, directly proportional to the magnitude of the field. Okay, so suppose मान लो there is a field like this. Okay, here A point, B point is there. Tell me magnitude of electric field is more किसमें, A या B या? The relative closeness of the field lines is directly proportional to the magnitude of the field. So A point. So EA is greater than EB. Theoretical है, but इससे also they will ask some questions. Next. The tangent drawn on the field lines at any points gives the direction of field at that point. So this is the electric field line. If I draw a tangent at that point, that tangent at A, the electric field direction is also उसी direction में. Tangent is nothing but the test charge का direction, movement direction. If the test charge, if I draw a tangent, nothing but test charge move ऐसा हो रहा है तो electric field at the B is also उसी direction में बोल के meaning. अधिक right on really. एंड फेमस वन दूसरा वाला क्या है, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट. याद है ना, वी स्टडीड इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देयर विल टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा. ऐसा अगर होगा इंटरसेक्ट हुआ तो मीनिंग क्या होगा, अगर टेस्ट चार्ज रखूंगा, इट हैज टू गो लाइक दिस एंड आल्सो गोस लाइक दिस, सो व्हिच इज नॉट पॉसिबल. एक ही डायरेक्शन में जाएगा. They tested already. That's why they conclude that two electric field lines never intersect.
Finish. Electric field lines are repelled by positive charge and attracted by negative charge. So here plus Q charge is here. एक electric field line is coming. It is repelled ऐसा हो जाएगा. Repelled by positive charge. ऐसा आ रहा है. Electric field lines repel हो जाएगा. And अगर negative charge है तो so ये ऐसा कर attract हो जाएगा. Some other field will be attracted towards the negative charge. Two more are there. Okay, so properties will be done. Next class में I'll give questions. Some JEE mains questions. Till here topic का we'll revise. Then we are entering into the flux Gauss like नया world में enter हो रहा है. Gauss law वगैरह चलेगा. Okay. Next property लिखो. In uniform electric field lines are straight, parallel, and equidistant. Whenever they say to draw the uniform field, just draw the parallel, equidistant lines. This is a uniform field. So straight, parallel, and equidistant. Distance should be same. This is a uniform field. Okay. Next one. Electrostatic shielding. I told you electrostatic shielding बोलते हो. So this is a conductor. Conductor के अंदर में electric field is how much? Electric field inside the conductor is always 0. Right? Shielding is act होगा. Suppose मान लो this is a conductor. Here positive charges से electric field is coming towards you. It is coming towards you. Okay. So आप क्या करेगा? आप inside बैठेगा. Right? Inside you will sit in the conductor के अंदर में. So conductor क्या होगा? Electric field is coming, charges, positive charges are coming, right? That means negative charges will be here. And positive charges will right इधर आ जाएगा. So क्या होगा? ये electric field जब आएगा ना, inside electric field create हो रहा है. Okay, that will cancel the outside वाला electric field. That's why net electric field will be 0. Net electric field inside the conductor is always 0. Okay. So this is called shielding बोलते हैं. Shielding. So पूरा electric field ऐसा नीचे inside they will act. So outside field cannot enter into that. So it will cancel each other. That's why for conductor का we know this conductor का याद रखो epsilon r or k value for conductor is infinity. Dielectric constant is infinity. ये वाला आपको कैपेसिटेंस में भी विल डिस्कस कैपेसिटेंस में वगैरह में. एंड लास्ट वन हो गया ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर में से परपेंडिकुलरली ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी देयर. इट विल बी नॉट लाइक कर्वेचर ऐसा नहीं रहेगा. समथिंग ऐसा रहेगा. परपेंडिकुलर सरफेस से इमर्ज होगा ऑलवेज. कंडक्टर से जब भी आएगा परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस से भी निकलेगा. ओके एक एग्जांपल देखो. हाँ करो कितना होगा आंसर. What is the sign of Q1 and Q2? If the lines are proportional to the charge, what is the ratio of Q1 and Q2? Which one is positive charge? Which one is negative charge? Q2 is positive, Q1 is negative. Yes. Now he's asking ratio of Q1 by Q2. Q1 by Q2 is how much?
1:2. Huh? 1:2. 1:2. भाई नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, इसका लेंस काउंट करो, बट आपको क्या करने का, माइनस में डालने का भाई, बिकॉज चार्ज का भी लगाने का. सो आंसर इज नो रॉन्ग. 8 क्या कैंसिल, -1/3 भाई, बिकॉज काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 lines are coming from the Q2. That's why Q2 की जगह में 18. ओके. Q1 का कितना लाइन्स है? 1 2 3 4 5 6 6 है, बट नेगेटिव चार्ज है ना -6. सो -1/3 इज आंसर. 1:2 क्यों बोला, मतलब गिनती नहीं किया ना, तो ऐसे बोल दिया 1:2. ओके. आंसर ऑलवेज फील्ड लाइंस का काउंट करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड. हाँ, इसका बोला तो आंसर इजी है. Sir, C. A is equal to EC is less than C. Yes, correct. C, A is equal to EC greater than EB. So denser length closer. So these are the things, properties based में small questions they will ask, and questions are there. But next class में we will do some numerical.